प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। नाज़रीन, वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी जे इंटरव्यू मुल्की सियासत में हिकिड़ा नया बहस छॾे छॾिया आहिनि ऐं हुनजा फवाद चौधरी जो इहो चवणु त ॿियो को सियासी ऑप्शन नाहे, उन करे इमरान ख़ान खे हलायो पियो वञे। हाणे जेकॾहिं अगरि ॿियो ऑप्शन मिली थो वञे त पोइ उहो मुतबादल कहिड़ो हूंदो ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में मुल्की सियासी सूरत हाल कहिड़ी हूंदी, इहो ॼाणूं था। हिन वक़्तु असां सां गॾु टेलीफोन में शरीक गुफ़्तगू आहे मुल्क जो नाले वारो तज निगार ऐं एंकर जनाब हामिद मीर साहब। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मीर साहब, ये बताइए कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू में जो 6 महीने का जिक्र किया गया है, ये प्राइम मिनिस्टर ने काबीना को मैसेज दिया है या प्राइम मिनिस्टर को किसी ने मैसेज दिया है? नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, इन्होंने कुछ दिन पहले एक जो अपने कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके साथ बातचीत की थी और उनको ये कहा था कि आप लोग अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं जी, और अगर आप कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे तो फिर आप लोग चल सकते हैं। अगर आपने अपनी कारकर्दगी बेहतर ना बनाई तो फिर मामला किसी और तरफ जा सकता है। तो उसके बहुत से मतलब लिए गए। किसी ने वज़ीर आज़म से वजाहत नहीं की, पूछी कि ये आपके कहने का मतलब क्या है। और फिर एक वजीर साहब जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला साहब के पास गए, उनको जाके बताया कि जी वजीर आज़म साहब ने हमारे साथ ये बात की है, इसका क्या मतलब है जी। तो वो मांडीवाला साहब ने कहा भी कि इसका मतलब तो ये हो सकता है कि आपकी छुट्टी हो जाएगी। अच्छा। एक और वजीर साहब जो हैं उन्होंने कुछ अपने जो सहाफ़ी दोस्त थे उनसे ये बात शेयर की। तो जारी बात है, ये कुछ सीक्रेट नहीं था इस्लामाबाद में, ये बात काफी दिन से चल रही थी कि वजीर आज़म ने अपने वुज़रा को 6 महीने का टाइम दिया है। अच्छा। लेकिन वुज़रा का ख्याल था, कुछ वुज़रा का ख्याल था कि शायद ये टाइम जो है ये वजीर आज़म ने हमें नहीं दिया बल्कि वजीर आज़म को किसी ने दिया। अच्छा। लेकिन जो भी सूरत हाल है इसमें मेरा ख्याल है 6 महीने बहुत लंबा टाइम है। इस वक्त इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो ये तकाजा कर रही है कि वजीर आज़म साहब 6 महीने का इंतजार ना करें बल्कि अगले 6 दिन में वो मामलात को बेहतर बनाने के लिए कोई फौरी कदम उठाएं। अच्छा मीर साहब, आप समझते हैं कि ये जो इत्तेहादी नाराज़ हैं, फिर ये जो वज़ीर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम बाजी कर रहे हैं और अब तो इस्तीफ़ा का मुतालबा कर रहे हैं, तो ये किसी बड़ी तब्दीली की तरफ एक पेशकदमी है? देखिए, तब्दीली उस वक्त आएगी जब अपोजिशन मुतहद होगी। अच्छा। फिलहाल अपोजिशन जो है वो हुकूमत पे तनकीद तो कर रही है लेकिन उसकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है। सही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन इस वक्त तहरीक में एतमाद लाने के लिए आमादा भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर हम फौरी तौर पर तहरीक में एतमाद लेके आएंगे और इमरान खान को अगर हम हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम फिर इमरान खान ने पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया कि हम इसको सूरत हाल को कैसे संभालेंगे। तो अभी जो जोड़ तोड़ इस्लामाबाद में चल रहा है वो सिर्फ ये है कि अपोजिशन इंतजार कर रही है कि हुकूमत के वो इत्तेहादी जो उससे नाराज हैं वो उनके साथ मामला तय कर पाती है या नहीं कर पाती। और अगर मामला तय नहीं होते तो उसके बाद हो सकता है कोशिश की जाए कि बजट इजलास में अपोजिशन और उसके जो नाराज इत्तेहादी हैं वो मिलकर कोशिश करें कि बजट मंजूर ना हो। और अगर बजट मंजूर नहीं होता तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा और फिर हुकूमत को निकालने के लिए किसी तरीके में एतमाद के लिए तैयारी की जा सकती है। इस वक्त भी हुकूमत की एक जो मुज़ाकराती टीम है वो शाहजैन बुगटी के पास बैठी हुई है और शाहजैन बुगटी जो है वो हुकूमत के वादों पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो फौरी तौर पे मेरे मुतालबे तस्लीम करने का ऐलान करें वरना मैं वापस नहीं आऊँगा। अच्छा मीर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब बीमारी के बिस्तर पे, अब वो उन्होंने सियासी रहनुमाओं से जो है वो मुलाकात शुरू कर दी। आप कैसे देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल? पहली बात तो यह है कि मेरी इतला के मुताबिक अब आसिफ अली जरदारी साहब बीमारी के बिस्तर पे नहीं है, वो सेहतयाब हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं वो। और उनका अपने पार्टी के रहनुमाओं से रब्ता है, लेकिन कोरोना की सूरत हाल की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे, मंजर आम पे नहीं आ रहे। वो रोजाना बहुत से लोगों से रब्ता करते हैं, अपोजिशन के लोगों से भी उनका रब्ता है, अपनी पार्टी के लोगों से भी रब्ता है, लेकिन उनका भी यही ख्याल है कि फिलहाल इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब होती है या नहीं होती और उसके बाद को फैसला किया जाएगा। अच्छा मीर साहब, अपोजिशन जो है वो भी एक पेज पे नहीं है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत तो बहरानों पे उनको बैरून और अंदर इंटरनल बहरान में भी हैं। तो आप समझते हैं कि अब मुतबादल क्या होगा जब अपोजिशन भी एक पेज पे नहीं है, हुक्मरान जो हैं वो भी मुख्तलिफ क्राइसिस में हैं, तो फिर मुतबादल क्या होगा इस तमाम तर सूरत हाल? मुतबादल जो है वो शुरू होगा जो भी सूरत हाल है ना, जो हिंदुस्तान
वो स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। अच्छा, कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से एक तब्दीली का आगाज किया जाए, क्योंकि वहाँ पे JUI और BNP मैंगल की अक्सरियत है, अच्छा, और उसमें अगर ANP जो है वो वहाँ पे हुकूमत की थाती है, तो अगर ANP के जो 4 MPs हैं वो अगर अपोजिशन की तरफ आ जाते हैं तो बलूचिस्तान से एक तब्दीली का आगाज हो सकता है। अच्छा। और अगर बलूचिस्तान में तब्दीली आएगी तो फिर अपोजिशन जो है वो कौमी असम्बली में भी तब्दीली लाने की कोशिश कर सकती है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमें वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, अवां नाले वारे तर्ज निगार हामिद मीर साहब जो तर्जियो ॿुधो त ईंदड़ ॾींहनि में मुल्की सियासी सूरत हाल कहिड़ी हूंदी। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे अॻवान जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि कोई और सियासी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इमरान खान इस वक्त तक बरकरार है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई कोई और ऑप्शन नहीं है? जी, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर वो ये बात समझते हैं तो उन्हें चाहिए कि पार्टी में बात करें, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो पार्टी के अंदर होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। और ये तो हर जगह, हर फैमिली में, हर घर में, जी बिल्कुल। हर इदारे में, आपके इदारे में भी होता होगा, सीक्रेट्स होती होंगी, बातें होती होंगी। तो ये नामुनासिब बात है। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो वो ज्यादा बेहतर है कि वही इसके ऊपर कमेंट्स करें, वही इसको एक्सप्लेन करें। कोई और ऑप्शन का क्या मतलब है? मेरी तो समझ से बाहर है ये चीज़। नहीं आफ्ताब साहब, किसी और इदारे की बात तो ठीक है कि, लेकिन इतना बड़ा फोरम, मुल्क का सबसे बड़ा फोरम, काबीना के इजलास में भी इस तरह की बातें, और फिर एक वफाकी वजीर ये कह रहा है कि असद उमर को जहांगीर तरीन ने निकलवाया, और फिर जब असद उमर की एंट्री हुई तो उसने पूरा जो उसका मामला थे उसको जहांगीर तरीन को बिल्कुल ही आउट कर दिया। ये तो बातें कोई मामूली बातें तो नहीं हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें ये मामूली बातें नहीं है, मगर ज्यादा मुनासिब होगा कि फवाद चौधरी ही इसको एक्सप्लेन करें और उसकी वजाहत करें। ऐसी चीज कैसे मुमकिन है? देखिए, कप्तान है, कप्तान की मर्जी है, कप्तान किसको कहाँ खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है, किसको रेस्ट देना है, ये कप्तान के ऊपर होता है। किसी के कहने से ये मामला इस तरह नहीं चलता है कि एक आदमी को इसने निकलवा दिया, उसको निकलवा दिया। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। ऐसी मेरे ख्याल है ये इंटरव्यू जो उनका हुआ है वो बहुत ही गैर नामुनासिब है ये बात। अच्छा भला आफ्ताब साहब, ये जो आज वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि सिर्फ 6 महीने हैं, हमें अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी, ये किसको मैसेज था? काबीना को मैसेज था या वज़ीर आज़म के लिए खुद का मैसेज था किसी और जगह से? आप लोग इतना क्यों इन चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं? सर देखिए, हुकूमत है, मुल्क का पूरा सिस्टम आपके हाथों में है। ये नहीं सिस्टम है, मगर कॉम्प्लिकेट करने में आप लोगों का भी बड़ा रोल होता है। चीज का बटंकर बनता है। एक बात जो एक सिंपल सी बात की जाती है, काबीना को एक मैसेज दिया गया है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए। ये प्राइम मिनिस्टर का हक है, राइट है कि वो अपनी टीम में अगर कोई वीक प्लेयर है तो उसको बोलते हैं, और ये तो हर जगह होता ही है। हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अपने प्राइवेट इदारों में, हमें भी मैसेज देना होता है कि भाई ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अब आप अगले 2-3 महीने में इसको सही कर लीजिए, बेहतर कर लीजिए। तो ये मैसेज को किसी और डायरेक्शन में ले जाने की जरूरत नहीं, इसको एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर लें। देखें, इस वक्त वैसे ही हमारी कौम, हमारा मुल्क, पूरी दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है पैंडेमिक के, तो हमें एक पॉजिटिव चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहिए। हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए कि उसमें कोई नेगेटिव चीज़ें निकाले। लाइफ इज वैसी बहुत मुश्किल है, तो उसमें हमें अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। अफसर साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो बयान है कि 6 महीने, ये हमने तो नहीं दिया, किसी मीडिया पर्सन या किसी मीडिया इदारे, तो ये तो हमें भी तो खबरें आप ही देते हैं, हम तो आप ही की खबरें चलाते हैं। मतलब ये पता नहीं आप कहाँ से किससे बात कर रहे हैं कि कौन देता है क्या नहीं देता, मगर मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव समझता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी कहा था कि हर मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस जज की जाएगी। वो उन्होंने अभी मजीद 6 महीने अपने मिनिस्टर्स को दिए हैं, और पहले भी यही हुआ, जिन मिनिस्टर्स ने अगर परफॉर्म नहीं किया किसी एक उसमें, तो उनको स्विच भी किया है, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में स्विच भी किया है, और एक आध को हटाया भी है। तो ये तो कप्तान का, PM का काम है कि इसको मॉनिटर करे और देखे। सही। आफ्ताब साहब, फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि जो नॉन इलेक्टेड पर्सनस हैं, उनको जब इलेक्टेड लोगों के ऊपर बिठाया गया तो पूरा मामला जो है वो बिगड़ गया, और फिर पलटा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की तरफ गया, और इस तमाम तर सूरत हाल में जो सियासी टीम थी कप्तान की, वो हिल गई है। तो क्या वाकई सियासी टीम का अब इतना असर रसूख नहीं रहा? अब जो दूसरे नान मुंतखब लोग हैं वो पूरे इस सिस्टम को चला रहे हैं?
دیکھیں جی، ایک تو یہ کہ فواد چودھری صاحب ایک ذمہ دار آدمی ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہے اور بہت پوٹینشیل ہے ان میں، اور انہیں چاہیے کہ اس قسم کی اگر کوئی چیز کمنٹس کرنا چاہتے ہیں وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں، کیبنٹ میں بات کریں، کور کمیٹی میں بات کریں. یہ مناسب نہیں ہوتا کہ اس طرح پبلکلی اس آ کے یہ اسٹیٹمنٹ دیے جائیں. میں تو اس کے اوپر کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. اچھا، مطلب فواد چودھری کے اس انٹرویو کو پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا پارٹی کارکنوں میں مایوسی پھیلی ہے یا وہ کہہ رہی کہ اظہار کی آزادی ہے، چلے رہنے دیں؟ نہیں جی، دیکھیں ہماری پارٹی میں ایک چیز تو اب بہت کلیئر ہے بہت، کہ ہمارے یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ہمارے یہاں جو ہے کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں آزادی ہے رائے ہے. ہم پارلیمنٹیرینس کا جو میٹنگز ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس میں بھی بہت اوپنلی اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں، کیبنٹ میں کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے یہاں وہ ماحول نہیں ہے کہ روب دبدبے کا. خان صاحب نے ایک بڑا زبردست انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے جہاں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی نامناسب چیز ہو رہی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں جمہوریت کا حسن بھی کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو نان الیکٹڈ لوگوں کی آپ نے ابھی بات کی تھی، وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکنوکریٹس کو ساتھ رکھا جاتا ہے اور ٹیکنوکریٹس کی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. اب وہ کپتان کے اوپر ہوتا ہے کہ ان سے کس طرح کام دے رہا ہے. وہ پرائم منسٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں ہر چیز میں میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں مداخلت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نان الیکٹڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ پیورلی پرائم منسٹر کا ڈیسیجن ہے اور وہ جو اگر بہتر سمجھتے ہیں وہ وہی کر رہے ہیں. اچھا آفتاب صاحب، آپ پارٹی کے اہم رکن ہیں، آپ پارٹی کی پالیسی سازی جو ادارے ہیں ان میں بھی بیٹھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پارٹی میں گروپ بندی ہے اور وہ اتنی سنگین ہے کہ فواد چودھری جیسے بندے کو میڈیا پہ آ کے یہ کہنا پڑا کہ گروپ بندی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پائے چیزیں؟ نہیں، میں گروپ بندی تو نہیں کہوں گا، مگر یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیبنٹ بھی ہے، کوئی کور کمیٹی ہے، کوئی اور کمیٹیز ہیں، تو کسی بھی ایشو کے بعد 2-3 لوگوں کی ایک رائے ہوتی ہے، 4-6 لوگوں کی ڈفرنٹ رائے ہوتی ہے. اس کو گروپ بندی نہیں کہا جا سکتا. رائے کو گروپ بندی اگر کہیں گے تو ہم زیادتی کر رہے ہیں. اگر کوئی اتنا زیادہ پریشان ہے تو اس کو پرائم منسٹر سے بات کرنی چاہیے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آزادی ہے رائے ہے جو اس طرح اوپنلی بات ہوتی ہے. صحیح. اچھا آفتاب صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اتحادی بھی اب آپ سے ناراض ہو رہے ہیں. تو اس تمام تر صورتحال میں آپ جو بحران جنم لے رہے ہیں، آپ ان پہ قابو پا لیں گے؟ دیکھیں، معاشی صورتحال تو جس وقت ہمیں یہ گورنمنٹ ملی اس وقت بہت ہی خستہ صورتحال تھی. پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو $20 ارب پہ تھا، ٹریڈ ڈیفیسٹ $32 ارب کے اوپر تھا. آپ کے ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا تھا، لاسز بڑھ گئے تھے. 14 ارب سے 30-31 ارب ڈالر پہ قرضہ چلا گیا تھا. اسی طرح فارن ڈیٹ جو ہے $42 بلین سے $95 بلین پہ چلا گیا. جی، تو ظاہر ہے اس چیز کو ہمیں پھر اقتصادی صورتحال خراب تھی اس وقت جب ہماری گورنمنٹ آئی. اس کو صحیح کرنے میں 1.25 سال 1.5 سال لگا. اور جس وقت یہ مارچ سے پہلے آپ دیکھیں جتنی معاشی انڈیکیٹر تھے سب پازیٹیو تھے اور ہماری جو اکنامی جو تھی وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی. اور پھر یہ کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس میں جو ظاہر ہے کہ پورے دنیا کی اکانومی خراب ہو گئی ہے. امریکہ جیسا ملک، یورپ جو ڈیولپ کنٹریز تھے جہاں پیسے کی کمی تھی وہ خود پریشان ہے. تو اس کا اثر ہم پہ بھی پڑا ہے اور خاص طور پہ ایکسپورٹ جو ہماری رکی ہے اور اس کی وجہ سے ڈالر کا آنا کم ہوگا. لیکن آفتاب صاحب یہ تو کرونا تو آیا ہے مارچ سے نا پاکستان میں، اور لاک ڈاؤن مارچ سے پہلے 9 مہینوں کی صورتحال بھی بہتر نہیں تھی، بہت بہتر ہو چکی تھی. ٹیک آف ہو رہا تھا اکانومی کا. آپ اٹھا لیجیے کسی بھی اکانومسٹ کو پکڑ لیں، اس سے بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت بہتر. سر لیکن آفتاب صاحب لیکن کل جو وزیر اعظم کو رپورٹ دی گئی ہے مالیات فائنینشیلی حوالے سے، اس میں تو یہ اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ کرونا سے پہلے بھی ملک کی معاشی صورتحال بہتر نہیں تھی. یہ کس نے رپورٹ دی ہے؟ یہ مالیاتی اداروں نے ان کو رپورٹ دی ہے، جو آج تمام تر میڈیا میں وہ خبر لگی ہوئی ہے. آپ اگر دیکھ لیں تو نہیں، یہ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسی خبر میری نالج میں نہیں ہے. میں صبح سے آج اسمبلی میں تھا. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر نے خود کہا ہے، ہم لوگوں نے سب نے، اکانومسٹ نے، شیخ حفیظ شیخ نے، حماد اظہر نے، جو کنسرن لوگ ہیں سب نے یہ بات کی ہے کہ اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی.
اور اس کے بعد یہ کووڈ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور دیکھیں یہ ہمارا جی صحیح. آفتاب صاحب, اسمبلی کے فلور پہ پیپلز پارٹی رہنما نے کہا ہے کہ جو کراچی سے منتخب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو جو فنڈ ملتے ہیں وہ صحیح ڈیلیور نہیں کرتے. آپ بتائیے کہ آپ کو وزیر اعظم کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے کتنا فنڈ ملا ہے اور آپ نے کہاں کہاں خرچ کیا ہے وہ؟ دیکھیں جی, یہ فنڈ پہلی دفعہ کسی کو نہیں ملا پی ٹی آئی کے لوگوں کو. اس سے پہلے بھی گورنمنٹ میں یہ فنڈ جو ہے نا ایم این ایس کو ملتا رہا ہے. یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اچیومنٹ پروگرام کا یہ فنڈ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد کراچی میں اس اسکیل پہ لگا ہے جہاں سیوریج کی لائنیں, جہاں پانی کی لائنیں, پیور اور کارپیٹنگ, یہ ساری چیزوں پہ کام ہوا ہے. اور ہم نے تو اعلیٰ اعلان یہ بلکہ یہ بات ہوئی, یہ میڈیا نے اس کا پروف دیا ہے کہ ایمانداری سے خرچ ہو رہا ہے اور بڑی برکت ہے اس فنڈ میں. یہ تو کہنا کہ مطلب آپ سندھ حکومت کو دیکھیں تو اس نے سندھ کے لیے کیا کیا ہے, کراچی کے لیے اپنے بجٹ میں کیا دیا ہے. آپ نے سوالات کیے ہیں کہ اس بجٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ کا بجٹ نہیں ہے سندھ میں, اور سندھ کی جو امپلائیز کی تنخواہ آپ بڑھا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہاں گھوس امپلائیز ہیں, اور گھوس امپلائیز کا جو پیسہ ہے وہ ان کی جیبوں میں جاتا ہے. صحیح. اچھا آفتاب صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو کیونکہ اتحادی ہم ناراض, ہر آنے والے دن پہ ایک اتحادی آپ سے ناراض ہوتا جا رہا ہے, اور ہمارے پروگرام میں حامد میر نے بھی یہ کہا تھا کہ اب حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ بجٹ پہ پاس کرانا شاید ان کے لیے مشکل ہو. تو بجٹ پاس کرا پائیں گے آپ؟ دیکھیں بجٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوگا. بجٹ بالکل ایک ٹیکس فری بجٹ ہے, ایک عوام دوست بجٹ ہے. بڑے عرصے کے بعد یہ ٹیکس فری بجٹ آئے ان حالات میں, جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں معاشی صورتحال خراب ہے. اگر معاشی صورتحال خراب ہے, اس کا جو نقصان ہوا ہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ہوا ہے. اس کو آپ کو بھی سمجھنا ہے اور ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ جو پیسہ ٹیکسز کی مد میں ملے گا حکومت کو وہی خرچ ہوتا ہے. اب وہ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا 60% تو این ایف سی کے تحت جو ہے نا صوبوں کو چلے جاتا ہے. باقی 40% میں ڈیٹ سروسنگ ہے, آپ کا ڈیفینس ہے, ایکسپینڈیچر ہے, اور ڈیولپمنٹ ہے, پی ایچ ڈی کے وغیرہ آ جاتے ہیں. اور 40% کے بعد جو حکومت پاکستان اپنا جو بجٹ شروع کرتی ہے لاس کے ساتھ شروع کرتی ہے. تو یہ تو بجٹ انشاءاللہ یہ پاس ہو جائے گا. بجٹ کے پاس ہونے میں کوئی ایشو نہیں ہے. سب کو معلوم ہے, اپوزیشن کو بھی معلوم ہے, اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. بہت شکریہ جناب آفتاب صدیقی صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین وٹھوں نڈی سائی سائی کا پورے پروگرام میں بہر حاضر تھی. پروگرام ٹائم لائن میں ایک دفعہ بہر اوان کے بھلی کار. ناظرین, بلوچستان ہائی کورٹ 10 NFC ایوارڈ کی جوڑجک کے کلعدم قرار ڈیندے حفیظ شیخ نانے والے سیکریٹری کی مقرری کے رد کرن جو حکم ڈنو ہے. فیصلے میں چیو ویو ہے تو 10 مالیاتی NFC ایوارڈ میں جو مالیاتی کمیشن ہے ان کے TORs وہ غیر آئینی ہیں, غیر قانونی ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ پنجے فیصلے میں یہ پن چیو ہے تو 18 ترمیم کا کنکریٹ لسٹ میں شامل ادارہ ہوا وہ صوبن نہ منتقلی تھی ویا. ہاں ضروری ہے تو مالی حوالے سے صوبن کے مضبوط کیا وے. بلوچستان ہائی کورٹ جن فیصلے تے گلائیں تھا. ان وقت سان پروگرام میں شریک گفتگو ہے اگوڑو سیکریٹری سائیں فضل اللہ قریشی صاحب. فضل اللہ قریشی صاحب السلام علیکم. مہربانی سائیں, وعلیکم السلام. اچھا قریشی صاحب, یہ کہ بلوچستان ہائی کورٹ جو فیصلو آयो ہے یہ تو صوبن جا کے اعتراض ہوا, خاص کر سندھ جا کے اعتراض ہوا ان کے ॼण انڈوز کयो ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے. تمام صحیح گال ॾिसो, इन ॻाल्हि ते पहिरियों प्रोटेस्ट करण वारो सिंध हुयो. जी. ऐं सिंध न रुगो ऑर्डिनरी तौर प्रोटेस्ट कयो पर सिंध जो चीफ मिनिस्टर मां सम्झा थो 48 कलाकनि जे अंदरि ई जेको आहे सो रिकॉर्ड लाइ ख़त लिखी मोकिलियो जंहिंमें हुन इहे ई एतिराज़ कया त बाबा हीअ जेका कंपोज़िशन आहे पहिरियों उहा बि ग़लति आहे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस बि ग़लति आहिनि. इन करे इहा जेका नोटिफिकेशन आहे इन खे कतई तौर रद्द कयो वञे. सही. ऐं मूं सिंध गवर्नमेंट खे जे कंहिं हल्कनि दोस्तनि खे चयो त बाबा असां कोर्ट में बि वञूं. उन्हनि सलाह ॾिनी त न इहे जे ख़िलाफ़ गवर्नमेंट कोर्ट में वेंदी, पर गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कयो ऐं पोइ ॿियूं धुरियूं कोर्ट में वयूं. इहो केस जेको आहे तो पंजाब में भी नवाज़ लीग वारनि पंजाब हाई कोर्ट में विधो ऐं इस्लामाबाद में भी जेको आहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विधो, पर उहे हर भर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन खे ड्रैग ॾिनी, पर हेॾे बलोचिस्तान कोर्ट फ़ैसिलो करे छॾियो. ऐं मां सम्झां थो जेकॾहिं इहे ॿिन्ही कोर्टुनि जो बि इहो ई फ़ैसिलो ईंदो, छाकाणि एबेडिशो जेका कंपोज़िशन जेका हुननि सजेस्ट कई त कॉन्स्टिट्यूशन में जेका आर्टिकल 160 आहे उहा तमामु वाज़े आहे. उनजी कंपोज़िशन में भी ऐं उनजे टर्म ऑफ रेफरेंस में भी. हाणे जेकॾहिं तव्हां उनजी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदव ऐं उहा बि अहिड़े नमूने कंदव जेका सूबनि जे इंट्रस्ट में न हुजे, जेकॾहिं इन में को सूबनि जो थोरो घणो ख़्यालु कयो वञे हा त हिन में ज़ाहिर आहे उहा बदनीयती हुई जेका नोटिफिकेशन कई वई हुई. ऐं उनजो मतिलबु इहो हुयो त हू सूबनि जो हक़ु मारियो वञे, अहिड़े क़िस्म जी NFC ठहे, अहिड़े क़िस्म जा
टर्म्स ऑफ रेफरेंस हुजनि तो जी। कोर्ट जो फ़ैसिलो तमामु जाइज़ आहे। हाणे जेकॾहिं थी सघे तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में वञे, पर मां नथो सम्झां त गवर्नमेंट खे का फुटिंग्स आहे त सुप्रीम कोर्ट में न वेंदा। अच्छा। इन जो नतीजो इहो रहंदो त जेको प्रेज़ेंट अवार्ड आहे इहो जारी रहंदो, छाकाणि जो जीअं तव्हां चयो त 18th अमेंडमेंट खां अॻु में ही अवार्ड अची चुको हुयो। इन करे 18th अमेंडमेंट में जेके एडिशनल बोझ पियो सूबनि ते त हुननि इहो फ़ैसिलो कयो त नेक्स्ट NFC में ॾींदासीं। 5 साल पोइ जॾहिं नेक्स्ट NFC जो वारो आयो त उहा NFC जॾहिं ठही त उन NFC जी का मीटिंग ई कोन थी मियां साहब जे ज़माने में, ऐं उहा NFC ईअं हली वई ऐं उहा 5 साल गुज़री विया। इहो एडहॉक पे हलियो पिए। हाणे वरी जेको आहे साॻियो NFC आहे, छाकाणि जो ख़तरो इहो आहे त जेकॾहिं नई NFC वेठी त सूबा इन खां वधीक घुरंदा। अच्छा। छाकाणि जो जेको बलोचिस्तान जे जजमेंट में बलोचिस्तान हाई कोर्ट चयो आहे त सूबनि खे 18th अमेंडमेंट खां वधीक जवाबदारियूं आयूं आहिनि, वधीक खाता आया आहिनि त सूबा वधीक घुरंदा, ऐं उन वधीक घुरण जे बदिरो फेडरल गवर्नमेंट पाण चए थी असांखे ॾियो पैसा। अञे तगोतो में इहो सिलसिलो ईअं ई हलंदो ऐं इन में मजबूरी को छा आहे जो फेडरल गवर्नमेंट जेकॾहिं फॉलो करे आहे इंस्ट्रक्शन जॾहिं लास्ट अवार्ड आयो त उन में इहे हिदायतूं हुयूं NFC जे तरफ़ो मर्कज़ खे, छाकाणि जो तव्हांजो जेको आहे सो हिसो जेको आहे सो घटिमो थो वञे ऐं तव्हांखे ऑब्वियसली ज़रूरत आहे पैसनि जी, त तव्हां ईअं कयो त पंहिंजा तव्हां टैक्सिस हर साल 1% GDP जे हिसाब सां वधायो। माना जेकॾहिं 9.5% GDP हुई त बाय द नेक्स्ट NFC उहो 16.5 थी वञे हा, अॻिते हली करे 20% थिया, जेको सुधरियल मुल्कनि में जेको रेशो आहे टैक्सिस जो। पर जीअं त असां वटि टैक्स इलीट जेका आहे सा अवॉइड थी करे, पोइ थोरो जो सूबो हुजे थोरो उहो मर्कज़ हुजे। डायरेक्ट टैक्सिस को सभु जेके हर हुकूमत जेका आहे सा डायरेक्ट टैक्सिस करणु कोन थी घुरे पई, ऐं जेका एलीट जेका पार्लियामेंट्स में वेठी आहे सूबनि में चाहे उन्हनि में, त उन्हनि जे एलीट खे प्रोटेक्शन जे करे तव्हां टैक्स कोन था वधायो पिया, ऐं जेके माफियाज़ आहिनि, जेके वॾा वॾा ग्रुप्स आहिनि, जेके वॾा वॾा कार्टल्स आहिनि, उहे टैक्स ॾियण में इंट्रस्टेड न आहिनि ऐं उन्हनि खे पार्लियामेंट जी बैक आहे। इन जे करे पोइ तव्हां टैक्स रेशो न वधाए सघियो। कुरैशी साहब जी जी 10 साल खां पोइ बि टैक्स रेशो उहो 9.5% GDP। कुरैशी साहब अवां चओ पिया त वफ़ाक़ी हुकूमत लॻे नथो त उहा सुप्रीम कोर्ट में वेंदी। अगरि सुप्रीम कोर्ट में नथी वञे त पोइ जेका जोड़जक हूंदी हाणे NFC जे हवाले सां, मालियाती कमीशन जे हवाले सां, उहा कहिड़ी हूंदी? मतिलबु हाफ़िज़ कुरैशी नाणे वारो सलाहकार बि न हूंदो, सेक्रेटरी बि न हूंदो, त पोइ अवां सम्झो था त सूबनि जो हाणे टेबल टॉक हिकु दफ़ो ॿीहर जेको लॻे पियो त हाणे माना ॻाल्हियूं न थींदियूं, उहे हाणे ॿीहर ॻाल्हियूं थियण वञनि पियूं। ॾिसो न, जेकॾहिं या त हफ़ीज़ खे सेनेटर ठाहे करे ऐं पोइ हुनखे रखनि, छाकाणि अॻे बि जॾहिं हफ़ीज़ जेकॾहिं हुयो बि त एज़ अ सेनेटर वेठो, ऐं जेकॾहिं या त तव्हां हुनखे सेनेटर इलेक्ट कराए पोइ फुल फ्लेज मिनिस्टर करे छॾियो, जेकॾहिं हफ़ीज़ को सवाल जेकॾहिं NFC नथी ठही सघे त। छाकाणि NFC को बि माण्हू आहे, जेके ॾिसो सुवाल इहो आहे त को बि वज़ीर तव्हांजो NFC हलाए सघे थो, छाकाणि जो हेठि ब्यूरोक्रेसी जेका आहे त सॼो स्पेट वक़्तु ब्यूरोक्रेसी कंदी आहे, थोरो सूबे में हुजे थोरो हुन में हुजे। हाणे असां वटि बि जेको आहे सो पंहिंजो मुराद अली शाह पार्टिसिपेट कंदो एज़ अ फाइनेंस सेक्रेटरी, ऐं हाणे की उहो बि उन लाइ बि इहो बि कुझु शइ अॻिते हली उथंदा त हू कीअं थो पार्टिसिपेट करे सघे, छाकाणि जो चीफ मिनिस्टर आहे या फाइनेंस मिनिस्टर आहे। उहो त जेको आहे सो इहे इशूज़ जॾहिं वेहे, छाकाणि हीअ त NFC वेहे ई कोन थी पई न। वेहण जो सबबु इहो आहे त जेका जॾहिं बि NFC वेठी त पंजाब लास्ट जे अॼु को 5-6 साल अॻु जॾहिं आयशा घोष पंजाब जी फाइनेंस मिनिस्टर हुई त जीअं NFC जी प्रिलिमिनरी थी त हुननि चयो त हिते सिंध गवर्नमेंट चयो त फार्मूला खे चेंज कयो। माना त असांखे टैक्स बेसिस ते, छाकाणि जो सिंध जी टैक्स जी उगाड़ी सिंध जे सरज़मीन ते घणे में घणी आहे, त असांखे टैक्स उगाड़ीअ जे बेसिस ते असांखे थोरा पैसा वधाए ॾियो। हाणे जेकॾहिं पैसा वधाइबा त पैसा उतो ई कढिबा जेके घणे में घणा पैसा अचनि था पॉपुलेशन बेसिस ते, त उन मां असांखे हिसो कढी ॾियो त पॉपुलेशन ते घटायो ऐं टैक्स बेसिस ते पैसा विरायो। त पंजाब जी उन वक़्तु रिप्रेज़ेंटेटिव आशा घोष चयो त हाणे तव्हां पंजाब मूं का एक्सपेक्टेशन न कयो, असां ऑलरेडी पंहिंजो अॻे कंप्रोमाइज़ करे चुका हुआसीं जो असां पंहिंजा पैसा घटाए पॉपुलेशन ते रेशो घटायोसीं, न त हिस्टोरिकली 73 को वठी भुट्टे साहिब जे ज़माने को वठी असां पॉपुलेशन ते पैसा बि खयासीं, असां हाणे वधीक कुर्बानी न ॾींदासीं। त उहा पोइ उहा बि नॉन स्टार्टर थी वई NFC, छाकाणि जो पंजाब जेके रिफ्यूज़ पियो करे त पोइ तव्हां वटि ॿियो तरीक़ो कोन हो।
हाणे हे दिस इज़ द बेस्ट फार्मूला. हिन खां पोइ जेको बि फार्मूला आयो मां सम्झां थो इट विल बी अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट ऐं अगेंस्ट द पंजाब. इन करे इन खे हलाईंदा या त वरी को अहिड़ो ॿियो को तरीक़ो इख़्तियार थिए. अच्छा कुरैशी साहब, सूबनि जो जेको बुनियादी TORs ते जेको एतिराज़ हुयो उहो इहो हुयो त फाटा लाइ ऐं कश्मीर लाइ जेको 3% घुरियो पियो वञे उहो न ॾिबो ऐं जेको पहिरियां जी गुज़िरियल जेको NFC अवार्ड हो हाणे उन खां वधीक ॾिनो. तव्हां सम्झो था त इहो जेको काल्ह वारो फ़ैसिलो हुयो इहो हुकूमत जी जेको नोटिफिकेशन निकितल आहे उन जी साख ई ख़तमु थी वई आहे काल्ह वारे, ऐं सूबनि वारो जेको एतिराज़ आहिनि उहो बिल्कुलु दुरुस्त साबित थिया. 99% दुरुस्त. ॾिसो फाटा वारो मसइलो कोन हो. फाटा वारो छा हो, जॾहिं फाटा NWFP जो पार्ट थियो त जेका 2000 हाणे छा जो हर सेंसस खां पोइ डिस्ट्रीब्यूशन जेका थींदी आहे नई सेंसस जे बेसिस ते थींदी आहे. जॾहिं फाटा NWFP जो हिसो थी वियो, KP जो हिसो थी वियो त KP जी पॉपुलेशन वधी वई. इन करे KP खे पॉपुलेशन बेसिस ते 2% वधीक मिलणा हुया, ॿियो कुझु बि कोन थियणो हो. ऐं बजाए उन लाइ अलॻि हिननि घुर कई. इहो ग़लति, इहो नोटिफिकेशन में ग़लती हुई, इहा लिखणी कोन खपंदी. कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट पाकिस्तान जो सूबो न आहे. कॉन्स्टिट्यूशन जेको चए थो सो विरासत थींदी सूबे जे विच में ऐं मर्कज़ जे विच में. तव्हां या त कश्मीर खे कॉन्स्टिट्यूशन में करे उन आर्टिकल जे तहत सूबो डिक्लेयर कयो, पोइ उहो भाङे भाए वर थींदो. साॻी ॻाल्हि गिलगित बल्तिस्तान जी. इन करे उहे फेडरेशन सां गॾु आहिनि, फेडरेशन उन्हनि खे ॾींदी रहंदी आहे हिसो, उहो फेडरेशन पंहिंजे हिसे में ॾींदी रहे आहे. बाक़ी जेको हुया सो फाटा जेको आहे सो अची वञे हा. इन में टोटल इन में छा थिया त KP जो हिसो जेको आहे सो 1.7% वधी वञे हा, ऐं पंजाब जो हिसो जेको आहे सो 0.7 या 8% घटिजे हा. सिंध जो बि पॉपुलेशन बेसिस ते 0.3% घटिजे हा. अहिड़े नमूने बलोचिस्तान. अच्छा कुरैशी साहब, अवां केतिरा पुरउमीद आहियो त हाणे जेको काल्ह जेको फ़ैसिलो आयो आहे बलोचिस्तान हाई कोर्ट जो, उन खां पोइ NFC अवार्ड तव्हांखे थींदे नज़र अचे पियो, हींअर हाणे मुलतवी न थींदो? न उहो NFC मूंखे कोई कोन थो थींदे नज़र अचे. ऐं न थींदे जेको बि NFC थींदो, मूं तव्हांखे ॿुधायो न, जेको बि NFC थींदो त उन में यूनानिमिटी कोन थी सघंदी. ऐं फेडरेशन जी पंहिंजी मजबूरी आहे त उहो टैक्स नथा वधाइनि, ख़र्च नथा घटाइनि. ॾिसो जॾहिं 18th अमेंडमेंट आयो, ऐं जीअं ज़मीर घुमरो साहिबु चवंदो आहे त बाबा फेडरेशन वटि रुगो 6 खाता रहिजी विया, त फेडरेशन खे को जवाज़ कोन्हे जो 40 मिनिस्ट्रीज़ रखे. सही. इन ॻाल्हि ते तव्हां गौर कयो न त 18th अमेंडमेंट खे वन वे ट्रैफिक करे सम्झो वियो. हुननि उहे साॻिया ई खाता मुख़्तलिफ़ नालनि में फेडरेशन में विधा. फेडरेशन में हिन वक़्तु 40 डिवीजन या 40 असां खातो चवंदा आहियूं. अच्छा कुरैशी साहब, अमां जेको चओ पिया त खाता वधीक आहिनि, इन जे करे इमरान ख़ान चयो पियो त NFC अवार्ड जेको आहे उहो नाक़ाबिल अमल आहे. नाक़ाबिल अमल आहे इन करे छाकाणि जो जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त जेका गिरास फेडरल रेवेन्यू थियनि थियूं पयूं उहे थियूं हिन साल बजट में 6573 बिलियन. सही. बिलियन. सही. उन में सूबनि खे मिले थो 2873, मर्कज़ वटि वञे थो 3700. हाणे इन में रुगो टैक्सिस बि आहिनि ऐं ॿिया रिसोर्सिस बि आहिनि. माना कुल सूबनि वञी रिसोर्सिस बीहनि था फेडरेशन 3700 नेट. जी हाणे हुन चयो न त मां माइनस को शुरू थो कयां. ॻाल्हि ईअं आहे त उन 3700 में 2946 वञनि था लोन्स जे, फॉरेन लोन ऐं लोकल लोन जे पेमेंट में. 470 अरब जेका आहे सा पेंशन आहे. 470 अरब में 369 अरब मिलिट्री पेंशन आहे, 111 अरब सिविल पेंशन आहे. सही. ऐं 1299 डिफेंस जो ख़र्च आहे. इहे 3 हेड जेके रुगो थिया इन्हनि जो ख़र्च आहे 4705. सही. असांखे जेका फेडरेशन खे जेका बचा पैसा थ्रू टैक्सिस ऐं अदर रेवेन्यूज़ ते 3700. माना they are starting with -1000. बिल्कुलु. अच्छा कुरैशी साहब, इन तमामु तर सूरत हाल में सूबनि जी तयारी छा हुजणु घुरिजे NFC अवार्ड लाइ, ऐं ख़ासि करे सिंध जी तयारी कहिड़ी हुजणु घुरिजे? साईं सिंध जी तयारी माशाल्लाह अॻे बि ठीकु हुई. बाय एंड लार्ज ॻाल्हि आहे त उन्हनि जी नुमाइंदगी करण में हमेशह असां अहिड़ा माण्हू चूंडिया आहिनि जिन खे असां घटि में सिंध जो सही नुमाइंदो कोन सम्झंदो आहियां. छाकाणि जो जेको अॻु में मांडवी वाला हुयो, ऐं मांडवी वाला जो मां नथो सम्झां त कराची पोइ ॿाहिरि हुनखे ख़बर आहे सिंध जी हालति कहिड़ी आहे, सिंध जी ज़रूरियात कहिड़ियूं आहिनि, ऐं सिंध कहिड़े ॾुखे वक़्त में गुज़री रही आहे. बिल्कुलु सही. हाणे बि जेको सईद साहिबु जेको नॉमिनेशन रखिया उहो बि कराचीअ जो हिकिड़ो दोस्त आहे असांजो. ठीकु आहे, पढ़ियल कयल माण्हू हूंदो, पर हुनखे कंहिं बि क़िस्म जो एक्सपोजर कोन्हे प्रोविंशियल फाइनेंसिस जो, प्रोविंशियल फाइनेंस जे डिफिकल्टीज़ जो,
सिंध जी रियल डिफिकल्टी छाकाणि जेका सिंध जो तव्हां रियल सीनियर पेश कंदव उहो पेश करे सघंदो जेके सिंध जो दर्द हूंदो आहे जेको सिंध सां गॾु रहियो हूंदो जंहिं सिंध में कमु कयो हूंदो एग्जैक्टली ही माण्हू अची उन कमिटमेंट सां न ईंदा माण्हू ठीकु आहे साईं मुराद अली शाह जी पंहिंजी कमिटमेंट आहे पर जेके तव्हांजी टेक्निकल जेका टीम हुअणु घुरिजे उहा शुड बी विथ जेका लास्ट एनएससी जॾहिं असां खटीसीं त आई एम प्राउड टू से त नाहिद शाह वाज़ द की पर्सन छाकाणि हूअ जेका असां फाइनेंस डिपार्टमेंट खे रिप्रेज़ेंट करे रही ॿियो असांजो दोस्त लगारी साहब आहे जेको फाइनेंस में रही चुको जंहिं 2-3 एनएफसी अॻे ॾिठियूं हुयूं उन करे असां पंहिंजो केस मेरिट ते ठाहिण में कामयाबु थियासीं छाकाणि जेको मसालो जेको बारूद आहे छो त तव्हांखे टेक्निकल माण्हू जी टीम ॾींदी न जेके सूबे में गॾु कमु कनि था ऐं उहे पंहिंजियूं नयूं नयूं शयूं हाणे खणी ईंदा जेके तव्हां पेश कयो सैयद सरदार अहमद बि चङो केस ठाहियो हुयो पोइ उहे अवार्ड असांखे मिलियो कोन पर सैयद सरदार अहमद जे ज़माने में सुठो केस ठहियो त असांखे केस ठाहिण में डिफिकल्टी कोन्हे असांजे केस क्लियर पियो आहे छाकाणि डेफिनेटली असां वटि घणे में घणियूं टैक्स कलेक्ट थियनि थियूं पयूं ठीकु आहे न जीअं तव्हां कराची वारा चवंदा 70% टैक्स जो फैक्ट आहे उनखे तव्हां कीअं इनकार करे सघंदा असां वटि गुरबत हाणे बलोचिस्तान खां पोइ गुरबत घणे में घणी आहे ख़ुशूसन सिंध जेका ॿाराड़ी आहे उन में गुरबत जो इंसिडेंट ऐं ॿिया जेके तमामु वधी विया आहिनि इहा ॻाल्हि बि मुख़्तलिफ़ स्टडीज़ में ज़ाहिर पई आहे त असां वटि गुरबत बि आहे एरिया जेका कुदरत असांखे ॾिनी आहे त असांखे जेके घटि में घटि 2 इंडिकेटर्स में पॉपुलेशन में असांखे मिलंदो छाकाणि जेका नई सेंसस आहे उन में पॉपुलेशन अञा पंजाब 1% घटि आहे सिंध जा कुझु परसेंटेज वधी आहे 17 में माना पॉपुलेशन ते वी आर कंफर्म एंड वी आर कंफर्टेबल ठीकु आहे रेवेन्यू रिसीट्स जेको ॿियो आहे मूल मतो उन में बि असांजी रेवेन्यू रिसीट्स इंप्रूव थी रहियूं जेके सिंध जे सरज़मीन ते वसूल कयूं वञनि थियूं माना छाकाणि पोर्ट बि असां वटि आहे ऑफिसर्स अटैच कराची जेको ठीक है टैक्स गुरबत ऐं जेके ॿिया मामला आहिनि उन में असांजो केस असां वटि बदनसीबी आहे त गुरबत बि छाकाणि गुज़िरियल 12 साल में जेका असांजो सिंध जो गवर्नेंस रहियो आहे ऐं इहा हुकूमत रही आहे वॾी महिरबानी साईं फज़लुल्लाह कुरैशी साहिबु नाज़रीन वठूं था नंढी साई ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं